our next video of science, class 9, chapter number 4, structure of atom in our 12th part. So in our previous class, we will do the stability factors, first point which is symmetry. Now we will do the second point of stability factor which is exchange energy. So अपने chapter के according फर्स्टली अपने चैप्टर ढूंढते ਆਪਾਂ फर्स्ट टॉपिक ਉਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंडर अब अपना फर्स्ट टॉपिक आ गया है which is introduction to atoms and subatomic particles. So अब अपना फर्स्ट टॉपिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट कर लिया इंट्रोडक्शन टू एटम एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स. सेकंड सी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड सी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड अपना फोर्थ सी protons and neutrons. Protons and neutrons in a nuclear steady shells ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ K L M ਤੇ N shells ਦੇ ਅੰਦਰ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪ ਨਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ which is structure of atom. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੌਪਿਕ 4 points ਆਏ ਜਾਂ 4 ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ. नेक्स्ट अपना है नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल्स. सो एटॉमिक मॉडल्स के अंडर भी आंदे ने ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ मॉडल आंदे ने 4 मॉडल. फर्स्ट इज थॉमसन, सेकंड इज रदरफोर्ड, थर्ड इज बोहर एंड देन इज डाल्टन. सो 4 मॉडल पढ़े आप एटॉमिक मॉडल्स के अंडर अपने चैप्टर दा सेकंड पॉइंट व्हिच इज एटॉमिक मॉडल्स. तो आप ਉਹਦੇ अंदर टॉपिक पढ़े टोटल 4 टॉपिक. सेकंड सी एटॉमिक मॉडल्स ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਾल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड and then fourth is Bohr's. So ਆਪਾਂ 4 atomic model ਕੀਤੇ. AM for atomic model. So ਆਪਾਂ 4 atomic model ਕੀਤੇ. First is Dalton atomic model, second Thomson, third Rutherford and fourth is Bohr's. So अपना next topic हैगा सी एक chapter ਦਾ electron distribution and stability. Our third main topic which is electrons distribution and stability. So electron distribution and stability के अंदर आप अपना first topic कर लिया सी which is electron distribution in shells. Electron distribution ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. second ਆਪਾਂ stability ਦਾ ਆਪਾਂ first point ਕੀਤਾ ਸੀ which is electron which is symmetry. So number third करना है stability के अंदर अपने electron distribution topic and electron distribution and stability topic के अंदर second topic which is stability क्योंकि electron distribution अपना डन है आप previous lecture ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹੁਣ second symmetry के अंदर ਆਪਾਂ first topic symmetry stability के अंदर first topic symmetry कर लिया और ਆਪਾਂ second topic करना है ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ exchange energy. So आ हो
इस चैप्टर की इंट्रो यानी कि कितने आप टॉपिक्स कर लिए अपने माइंड मैप लेक्चर्स के अंदर। सो सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। So exchange energy in degenerate orbitals. Degenerate orbitals means degenerate orbitals ਕਿਹੜੇ orbitals ਹੁੰਦੇ ਨੇ? degenerate orbitals ਉਹ orbitals ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ। so ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ same। So degenerate orbitals की define आ चुका। The orbitals which has same energy is known as degenerate orbitals. So degenerate orbitals होने जिनकी same energy होवे, electron with parallel spins can exchange position. जिन्हें electron होन parallel spins और exchange कर सकते हैं अपनी position, release कर देने energy. So exchange energy नु अपन release energy भी कह सकते हैं। So release energy and exchange energy is same. So जिथे भी किते word आवे that what is release energy and what is exchange energy, so तुसी आप पूरा define आज same ही लिख के आना। So release energy, positions release energy, exchange energy, more possible exchanges means more energy releases. जिन्ने वध तो वध exchange होणगियां energies यानी कि energies release होणगियां उन्नी ही जी अपनी एनर्जी जिन्नी आप एनर्जी रिलीज करांगे उन्नी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। So how many more possible energies means stability increases। stability ਜਿਹੜੀ greater ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ exchange ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ release ਕਰਾਂਗੇ। जिन्हें रिलीज करांगे उनकी स्टेबिलिटी हाई। तो आपने सारा टॉपिक है एक्सचेंज एनर्जी के अंदर। सो आवर थर्ड पॉइंट व्हिच इज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टेबिलिटी ਦੇ अंदर थर्ड पॉइंट करांगे व्हिच इज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड and fully filled orbitals। half filled and fully filled orbitals। so ਜਿਹੜੇ half filled ਤੇ fully filled orbitals ਹੁੰਦੇ ਨੇ these configuration allow for maximum exchanges। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ configurations ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ configurations। So half filled ਤੇ fully filled energies ਦੀਆਂ orbitals ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ configuration ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ allow ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ exchanges ਨਾਲ। so ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ configuration ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ allow more exchanges। So the half filled and इधर में define आ जाएगा the half filled and fully filled orbitals configuration allow more exchanges। So more exchanges होंगियां तो energy greater stability greater होगी। How now possible more energies means greater and stability। So make them exceptional stable। आ इन्हां नू exceptional stable बनाउंदे ने। सो आज से पूरी फुल्ली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड दी डिफाइन हम आप एग्जांपल करांगे एक। सो sp-df ऑर्बिटल्स ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। p4 ਜਾਂ ਫਿਰ सो P4 D5 सही है या फिर P3 P5 सही है या फिर P4 तो P10। सो ऑप्शन ए आ होगी ऑप्शन बी। सो इतना अपन MCQ
सकते कि दैट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशंस विच इज द करेक्ट वन। सो इन्हां विचों करेक्ट वन हैगी है P4 P6 एंड D10। सो P3 ते PD भी 10 ने, बोथ ने करेक्ट, क्योंकि आप लिखते हैं 1s2 2p3 2p6 2p3 इधर कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं जेदा इंटर आउंदा, यानी कि P3 ते D5 P6 ते P10। कदे भी P4 जे हुण इथे हुंदा P4 ते D9 ते केड़ी कॉन्फ़िगरेशन सही होनी सी P3 ते D5, यानी कि इन्हां दी पूरी एक बाइंडिंग होई हुंदी इलेक्ट्रॉन्स दी कि इस शेल दे इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है, इसकी इतनी, अगले दिन इतनी, अगले दिन इतनी। टोटल 4 हुंदे ने ऑर्बिटल्स व्हिच इज S P D एंड F। इन्हां नूं ਆਪਾਂ S P D F ब्लॉक्स भी कहने आ। सो आ हो गई अपनी स्टेबिलिटी दे थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। Example of stability. So जेदे अंदर फर्स्ट एग्जांपल होगी हीलियम। सो हीलियम का सिंबल होता है He। हीलियम को होंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हीलियम को होंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन्स। Helium has 2 electrons in first shell. Helium ਦੇ first shell ਵਿੱਚ 2 electrons ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ helium fully stable ਹੈ। helium stable ਹੈ। helium ਦਾ first shell यानी कि ਜਿਹੜਾ outer shell ਹੈ ਉਹ 2 electrons ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ stable ਹੈ, ਜਿਵੇਂ electrons ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। सो जिवें इन्हां दे इलेक्ट्रॉन्स ने, इहदे ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟੈਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਸੋ ਯਾ ਸ਼ੈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s2 1s2। ਸੋ ਇਹਦੇ 2 ਇਹਦੇ s ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਇਹਦਾ ਆ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੀਲੀਅਮ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ helium has 2 electron in the first shell, यानी कि full है the shell, so making it very stable, or due to his first fully filled shell the helium is stable. So आ होगी the first example। second आप करेंगे example nitrogen। so helium ਦੀ configuration ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s2। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ nitrogen ਦੀ configuration ਹੋਊਗੀ 1s2 2s2 and 2p3 3 4 5 6 7। so nitrogen ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 electrons। 3 2 plus 2 ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 7। so ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ electrons ਆਪਾਂ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਰਦੇ 7। सो इन्हां दे कदे भी आपां आ क्वांटम इधर प्रिंसिपल नंबर्स आ वाले जेडे मैं सर्कल च ले रही हां आ नहीं देखने, हमेशा इन्हां दे उपरलियां पावर्स लिखनी है, वो पावर्स इलेक्ट्रॉन्स ने वही आपां काउंट करनी। सो नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी दे आपां नाइट्रोजन दे एग्जांपल लिख ली, जेडी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। so half filled 2p subshell, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 2p subshell ਹੈ, ਆ ਹੈਗਾ half filled subshell ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਵੀ half filled ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ 2 ਇੱਕੋ ਵੀ 2, ਜੇ ਕੋ 4 ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ fully filled। ਸੋ ਇਹ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਨੇ इस तरह आ वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाला नहीं है ना, जेदे करके आ हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड करके ही स्टेबल है। ड्यू टू द sp3 subshell of nitrogen is half filled, so that's why the nitrogen is stable। यानी कि नाइट्रोजन दे जिदा हाइड्रोजन हीलियम दे हैगा सी फर्स्ट शैल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ,
ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਸੀ, ਆ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਰਕੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਕਰਕੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀ। So this is the reason between the helium and nitrogen, that why the helium is fully filled stable and the nitrogen is half filled stable. So here examples, nitrogen, helium and nitrogen, which is example of stability. So our next topic, which is electron distribution in shells. So shell ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? K element shells. So ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ stability topic ਹੀ ਕੀਤਾ, next ਆਪਾਂ topic ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ next class ਵਿੱਚ। So hit the like button and drop a comment if you have any query or any doubt. I will do my best to give you answer. So don't forget to subscribe our channel for more videos like this. Thank you.